Thank you all for taking time out to listen to an old man. You know, uh, हमारे यहाँ वैसे हमारी संस्कृति में और चीन चीन की संस्कृति में एक कॉमन चीज है कि बुजुर्गों का बहुत महत्व होता है। सब जगह नहीं होता, पर इन दो संस्कृतियों में बहुत। और शब्द प्रमाण जिसे हम कहते हैं एपिस्टेमोलॉजी, epistemology, that is means of knowledge. You see, there are, when you talk of knowledge, there are two aspects, rather more than two. I'll just tell you. Gyan, Gyan ke, there are many dimensions. First of all, what is it that we want to know? The object of knowledge, right? Second is, how do we know what we want to know, right? Third, who is the knower? Who is the knower? Fourth, what is known? And fifth, is what is known valid? जिसे हम ट्रूथ कहते हैं, जो हम जानते हैं, क्या वो वैलिड है? Is it true? It is valid? ये 5 प्रश्न होते हैं. And in all these 5 questions, you know, there has been through both the traditions, Western and ours, and all the traditions of all the histories of ideas, they have concerned themselves with these questions. So in any case, as is my habit, you know, I start by something different rather than the subject. You know, my classmates used to wonder, my students in JNU used to wonder, what will I talk today? And so that is, I think that's a privilege of an old man. He's anecdotal and he's also repetitive. और पंजाबी में कहते हैं कि कोई भी खूंटी लगा लो, टांगनी तो हमने अपनी कमीज ही है ना? कोई भी खूंटी लगा लो, टांगेंगे तो हम अपनी कमीज. और एक और सेइंग है इन हिंदी कि परनाला तो वही गिरेगा, वो जो ऊपर से पानी आता है, जब जितने मर्जी नेबर्स ऑब्जेक्ट कर ले, हमारा तो वो जो ऊपर का पानी है वो तो वहीं गिरेगा. तो इसलिए कोई भी सब्जेक्ट हमको दे दीजिए, बोलेंगे तो हम वही जो हम बोलते हैं, है ना, जो हम समझते हैं. But today, let me start by telling you that I am more than half Sikh myself. I was born in Amritsar. I am what is modern phonology Khatri, because in Punjabi Ksha became Kha and Kshir became Khir and Kshatri became Khatri. And the enjoined duty of Kshatris has been defense of Dharma from the beginning. And if you look around, look through history and look around today, you will find that people of our community have always played a very important. By the way, all Sikh gurus were Kshatris. We must remember that. And gods are Kshatris. Ram, Krishna, you know, they were not Brahmins. The job of the Brahmins is to do worship to them, है ना? तो इसलिए हमें बहुत ज्यादा जो हम लोग ब्राह्मणवाद और ब्राह्मण और ये करते हैं वो गलत है, क्योंकि इंडिया की जो टॉप पावरफुल हायरार्की है उसमें वो नहीं आते हैं. But this is controversial, so I will drop the subject here. Now, I was born in Amritsar and I am a Kshatri and I belong to the same community as the Sikh gurus. There were 10 Sikh gurus. 7 of them were Sodhis, Sodhi or Bedi, Sodhi or Bedi. These are 2 communities of Punjab who are held in great reverence by the people. Because Guru Nanak Ji was Bedi and the 7 of the other Sikh gurus were Sodhis. Sodhi, because
Guru Gobind Singh Ji, perhaps, look at these 10 gurus. Guru Nanak Ji in the beginning and Guru Gobind Singh Ji at the end. These two are, you can say, it's like if you have a huge bridge on a river, Howrah Bridge. Then on the two sides you have very high pillars, isn't it? Very high pillars. So in the same way, in the bridge of ideas and in the bridge of dedication to dharma, dedication to the welfare of the people, धर्म क्या है? धर्म का अर्थ रिलीजन, एक आजकल धर्म का प्रयोग होता है रिलीजन से, बट धर्म does not mean religion. There is a difference between dharma and religion. Maybe in the discussion it will come to that. So in the bridge of ideas, the defense of dharma, the two pillars, are Guru Nanak Dev and Guru Gobind Singh Ji. Two outstanding individuals, unique in their times, and in their own way, each way, unique for India also. So India has been lucky to have hundreds and thousands of thinkers. And generally, those thinkers, our thinkers, they are basically concerned with ethical issues. The basic ethical issue being justice for mankind, justice for all human beings, not human beings, justice for all beings. The West is teaching us human rights these days, but we as a civilization have been concerned with the rights of all jiva, because we don't believe that man is the supreme or the only worthy creature. We have a cycle of 84,000 beings, 8.4 million, which is very close to modern estimate in also. Or in that shrinkhala, that chain of being, all jivas, each one has a right to live. Each one has a right to live. Not that man has a, it's not like the Deuteronomy, Old Testament, where God tells Moses, God tells Adam, I have made you in my image, and you enjoy all the fowl of the air and fish of water are for you to enjoy, exercise dominion over them. Not with us. We are no superior to a smallest, every small, even the ant. That's why you might have noticed in India that in the evening, sometimes you find people with a bag of, sugar and atta looking for where the ants are and feeding that to the ants. Because when my daughter once asked me, why are they doing it now? I said, because there was rain. And when there is rain, the ants cannot move out. So they have to be fed. So people feed them. And in drought, when there is a drought, then you must know that in states like Gujarat, when there is shortage of drinking water, they worry more about the animals than about themselves. They set up huge drinking places for the animals. So India has been different and lucky that we have had a long tradition of thinkers. Most of them, all of them in fact, were basically concerned with Lok Sangraha. Now this phrase Lok Sangraha, it means welfare of the people. And it occurs repeatedly in Indian philosophical literature. In Bhagavad Gita itself, this phrase occurs 3 times. Lok Sangraha. जो भी हमने करना है, you see, in our civilization, in our culture, no
human effort is an end in itself. Even pursuit of knowledge is not an end in itself. Knowledge also must be inflected for the welfare of the people. Welfare of the people. One of the poeticians, one who Auchitya Vichara, Auchitya thinker, he says, what is the point of a beautiful poem? What is the point of beautiful similes and metaphors if they don't teach you Jivan Auchitya, appropriateness of what you should be doing in life, propriety of what you should be doing in life? So ethical imperative has always inflected human effort in our civilization. And we have had a long tradition of these. Now, I was saying, I started by introducing to you, of course, you all know that we have had 10 gurus, and these 10 gurus, I was telling you about how the two ends you have Guru Nanak and Guru Gobind Singh Ji. Both were extraordinary even in terms of the great men of the world, and they were absolutely extraordinary in terms of the great men that our country has produced. Because to be brief, Guru Nanak Ji, came, he appeared. Pragat hona kehte hain, pragat. Dhund miti चानन होया जद नानक प्रगटया. मिटी धुंध जग चानन होया जद नानक प्रगटया. The fog disappeared and the world became effulgent. There was light when Guru Nanak appeared. Guru Nanak appeared. I often say that everybody understands also, but generally, people like me think that they have discovered the idea. They haven't. They have also learned like others. Yet this dhund, this fog, what fog was it that covered the people in the 16th century, beginning of 16th century, end of 15th century? It was the fog of suffering born of ignorance. But basically the fog of ignorance, avidya, ajnana, because non-knowledge always brings some kind of suffering. Non-knowledge. Jaise agar if you misplace your home keys somewhere or your car keys and you don't know where you put them, you will suffer. It's a very gross example. At a much at a more abstract level, much heavier level, whatever happens to us in life, sukh, dukh, we are able to handle or not handle depending on how much wisdom we have garnered from our experience in life. So, dhund miti, at that time, there was great suffering. And that suffering was because people were victims of avidya, ignorance. Avidya is not really ignorance. I must, as a passing remark, say that we must avoid translating our concepts into the other language, particularly a language which belongs to another cultural thought tradition, because the translation sort of takes away the thought. It gives a little deviation to the thought. Avidya is also a kind of vidya, something that you learn. But it is called avidya because it is something that which may not be very desirable, which may not be very useful to you. So it's a kind of knowledge which will not contribute to your happiness, avidya. So avidya. So there was the fog of ignorance. And when Guru Nanak appeared, that fog disappeared. Guru Nanak disseminated knowledge, true knowledge, proper knowledge.
He disseminated knowledge, and that knowledge, what was that knowledge? That will be the subject matter of our discussion today, our little introduction. तो उन्होंने ज्ञान को बांचा, उस ज्ञान को जो बांचा, उससे जो दुखित जगत था, संसार था, उसका दुख कम हुआ, उसकी दुख की धुंध मिटी. ये so you can imagine, you see, he lived and wrote when the Mughal empire was there. Mughal kings were there. And he particularly reacted to Babur's invasions. You see, in one of the battles in Imnabad, in today Pakistan, he defeated the local ruler. There was a great loss of life, but he himself lost many soldiers. So he lost so many soldiers, Babur, that after the battle, he ordered general slaughter of the people. And, boys and girls and old people and women and the non-combatants, they were all slaughtered. Such was the slaughter that Guru Nanak wrote a composition, Babarwani, in those days. Now, wrote is a wrong word, because our tradition is not a scriptural tradition. Our tradition is an oral tradition, oral culture है, मौखिक परंपरा है. तो चलते फिरते उनके मुंह से निकलते थे, जो शब्द निकलते थे, वो शब्दों को उनके जो साथ होते थे वो नोट करते थे. पर जो हमारे यहाँ, the better word is not a writer but a composer. Somebody who composes his ideas, is more close to music very naturally and rightly, because there is, that the Guru Granth Sahib, the Bani is in ragas, रागों में set है, रागों में, जिस तरह ऋग्वेद छंदों में है. And there's an interesting question for you people to think, why in India our knowledge texts are all set in meter, metrical hai. Why are they metrical? They are meant to be sung. They are meant to be sung. What you can sing, you remember more than what you cannot sing. इसलिए आपको हिंदी फिल्मों के पुराने गानों की लाइनें बड़ी याद रहती हैं, because you can sing them. When you hear them, you sing the rest of it. So they are our knowledge texts, Granth. They are set in metrical arrangements. Chanda in Rigved and Rag in. I'm talking about these two pillars. Guru Nanak came at a time when there was a lot of violence in the country. Lot of violence. Although Guru Nanak is in the same tradition as Mahatma Buddha, and there are 2,000 years separate them. 2,000 years. But the concerns were the same. Mahatma Buddha also concerned with the suffering of the people. And Guru Nanak also concerned with the suffering of the people. And in Buddha's time, in Mahatma Buddha's time, there were the kingdom in which he lived, and the India was very powerful militarily. So there were no foreign invaders, but there was so much of sedate and steady and comfortable life that people's ethics, people's ways of life became very degenerate. And instead of a foreign invader causing you suffering, people caused suffering to each other. People caused suffering to you because they were greedy and they were powerful and they were oppressive. Because the oppression doesn't come only from outside. Oppression comes from within also. But so Mahatma Buddha addressed himself to the question of suffering. And of course, his resolution was different. His resolution was that we can counter suffering in human society by doing right actions. आपको पता है हमारे यहाँ कई चीजें बड़ी फिक्स्ड हैं न्यूमरल्स में, हमारे नॉलेज ट्रेडिशन में.
जैसे जिंदगी में 3 मार्ग हैं. There are 3 paths that you can choose from in your life. ज्ञान मार्ग, कर्म मार्ग और भक्ति मार्ग. 3 मार्ग हैं, ज्ञान, कर्म और भक्ति. You can pursue knowledge, you can pursue action oriented towards. Then on each knowledge पे भी there is lot of reflection. What knowledge? What kind of knowledge? Karma. What kind of karma? And as you know, in Bhagavad Gita, one whole chapter is devoted to karma, types of karma. Karma, akarma, vikarma, nishiddha karma, niyatit karma, sanchit karma. Huh? So wait, what? And then nishkama karma. So Mahatma Buddha chose the life of action, right action, Ashtanga Marga, 8-fold path, which were very, in fact, he addressed ordinary people in very ordinary language and small things that people were required to do. There, according to Mahatma Buddha, there are only 4 Arya Satya, 4 basic truths of human life. That human life is full of suffering. All suffering has a cause. That cause can be eliminated. And fourth, how to eliminate that cause. You see? So these 4, from this, how to eliminate? Ashtanga Marg, 8-fold path. 8-fold path. ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, दुख नहीं देना चाहिए, अपने पे ध्यान नहीं देना चाहिए. There is a beautiful Jatak narrative. You see, that Jataka, बौद्ध स्टोरीज हैं जातक. और प्रॉब्लम क्या है हमारे साथ कि हमारी सब किताबें खूब अनुवाद में, ट्रांसलेशन में मिलती हैं, इसलिए बहाना भी नहीं रहता कि हम पढ़ नहीं सकते, है ना. सिर्फ हम पढ़ना नहीं चाहते इसलिए नहीं पढ़ते. और जातक कथाएं जो बेसिकली देवर इन पाली और देवर इन संस्कृत एंड पाली, but they are available in Hindi, in Malayalam, in Bangla, in English, and only you have to decide to read. So there are 2. I'm giving example. Mahatma Buddha का जो अष्टांग मार्ग, that is, you have to choose your way of life, right way of life, and you have to be concerned with others and that right way of life. And the 2 very small stories are there. One is that there is a person sitting inside his hut, and this is about the rains are about to start, rainy season, Chaturmas, 4 मास की जो rainy season होता है, it is about to start, and he is sitting inside, and he says, I have rebuilt my walls and I have plastered them. I have put a new roof. I have made a little wall around the house so that water cannot come. And I have collected food, grain and other for 4 months. And I have put my fuel also inside, dry wood, because then dry wood will not be. So I dare you, you can rain as much as you want to rain. This is one way. Next story is, a traveler comes and he is sitting inside a broken down abandoned hut. He is sitting inside an abandoned hut, and he says, well, the walls are broken and the roof also leaks. Roof also leaks, and the floor also, nothing is done. And I have only 1 day's food with me. But in any case, I am a traveler. I'm going to stay only for a brief while. So you can rain as much as you want to rain. It's like, one modern story I read from USA, not actual narrative, that somebody went to met somebody sitting inside the room, and it says that, look, why you don't have anything with you? He says, I'm traveling. He says, I'm traveling, so I don't have much with me. So we are all travelers, and ये जो दुनिया है, ये तो एक धर्मशाला है. हम आके रुके हुए हैं थोड़ी देर के लिए, फिर चले जाएंगे. और दूसरा व्यू ये है कि हमें संचित करना है, धन इकट्ठा करना है. अगर हम इसमें करेंगे तो then महात्मा बुद्ध के अनुसार, will be causing and producing suffering. So there is that disinterestedness in the self.
तो कर्म मार्ग, महात्मा बुद्ध had chosen कर्म मार्ग, कर्म का रास्ता। मैंने कहा 3 मार्ग हैं, 4 आश्रम हैं जिंदगी में, 4 आश्रम हैं, पढ़ने पढ़ाने वाला, गृहस्थ का, और फिर जब बच्चे बड़े हो जाएं तो थोड़ा छोड़ के वनवास में जरा अलग अलग रहना, और जब शरीर चलता नहीं है और कुछ पचता नहीं है, पराठे खाए नहीं जाते, तो फिर संन्यास में चले जाना, जहां फल फूल खाओ और ये करो। करते नहीं है लोग, करते नहीं है, बिकॉज यू नो everybody for some reason wants to live as much as one can, which is why one of my senior teachers, Professor Gill, used to say that hospitals and courts are anti-God institutions. You see, because राम गयो, रावण गयो, गयो सब दरबार, तो आप भी चले जाओ जब बीमारी ज्यादा होती है, तो लगे हुए दवाइयां खाने, ट्रांसप्लांट करने, कभी नी बदल लिया, कभी हार्ट बदल लिया, कभी लंग्स रिप्लेस कर लिए. Why does one want to live beyond or so much? Anyways, that's another issue. Come now to that Guru Nanak Dev Ji. So, you know, and in Buddha's time, there was no external oppression, but the society itself had degenerated. Where do you get the evidence? If you read Bharat's Natya Shastra, so Natya Shastra begins with this, that Brahma telling Bharat that, look, you know, the ways of people have declined, people have become greedy, they have become full of anger, and they hate each other. So, and their mental abilities have declined. They cannot read philosophical texts, they can't read Vedas and Upanishads. So you prepare something, some natak, some drama, which will teach them by entertaining them. Teach them by entertaining them. So saras, then teach them by entertaining them. So then, you know, and then that description of society having it applies to the times when Mahatma Buddha came up with this philosophy of Ashtanga Marga, eightfold path. But Guru Nanak Ji came when there was violence and people were being slaughtered and killed and violently oppressed. And the people were so weak because the oppressors, the invaders were coming from outside. There was no possibility, because there was no possibility of the people fighting back. It was not possible. You can't fight back. You don't have the strength. You don't have the unity to fight back. So Guru Nanak, you know, there had been about 500-600 years of this fog in India, fog, dhund, 600-700 years of fog. And Indian people, very proud people, and with world's richest knowledge heritage. Perhaps you are aware that in spite of all losses and burning and poverty of the Pandits who used to maintain, India still has 10 million manuscripts. 10 million. Nalanda library, when it was set on fire in 13th century, that library had so many granth that it burned for 3 months. 3 months. But in spite of such losses, because India was perhaps the first country with very major universities, international universities. Taxila was there even in 1000 BC, 900 BC. And Taxila, Vallabhi, Vikramshila, Nalanda, you know, there were a whole series of universities. Now, they were all burnt, and if ever you read Will Durant's History of Civilization, Will Durant, he has a very touching thing to say. He says that the case of India shows that civilizations are very fragile things, very fragile, because civilizations have people who have some culture, and the culture means that they learn, not only they learn to accept and allow space, give space to others. So they become
they don't become self-centered so much that they think only of themselves. And for them, there is, in fact, no enemy. In fact, the Jain, if you are familiar with the Jain philosophy, the Jain philosophy is the culmination of civilization. You see, the Jain people say that stopping the flow of a river, natural flow of a river, is violence, hinsa. Preventing a tree from growing naturally is violence, hinsa. But as you know, we are in a bonsai culture आज, है ना? इतना बड़ा पीपल उसको इतना सा बना के लोगों को दिखाते हैं कि देखो जी, एक जमाना था जब civilizations distinguished themselves by making ordinary people extraordinary, by making small people great people. We are in a civilization where great people are made small, where grand things are made small, and they are considered as works of art. Works of art. There is a civilizational, cycle that we are in. Anyway, so you see, the Mahatma Buddha, Guru Nanak Ji, when he came, it was not possible. So Guru Nanak Ji chose the second marg, not the karma marg, Gyan marg. He chose the Gyan marg. ये तीन मार्ग हैं, ज्ञान, कर्म और भक्ति. ज्ञान मार्ग लिया उन्होंने, और ज्ञान मार्ग is a pure, self-realization, knowledge of things, in which ultimately you become sthit pragya, and for you sukh and dukh are the same. Neither you become very happy when you get something, nor you become very unhappy when you lose something. But that amount that you do, that is not only at the level of the mind, it has to be at the level of experience. Atmasat kiya. At the level of the mind, I can talk of these things for others, but when it comes to me, I will not be able to. But it has to be, we have to evolve to a stage where these things become a part of us. So Gyan Marg mein, he chose the Gyan Marg. What it was, I will come to that in a little while. And the other pillar, Guru Gobind Singh Ji. Look, when we say Gyan Marg, Karma Marg and Bhakti Marg, Gyan Marg, Karma Marg and Bhakti Marg, it does not mean that they are completely isolated cabins. Because ज्ञान अर्जन करना, acquiring knowledge itself is karma. वही तो कर्म है. And karma, action gives knowledge, produces knowledge. And isn't it? And when you have acquired a certain level of understanding, then you respect everything. You respect the other's opinion. You respect even a small sparrow building a nest for its young ones. You admire, you respect, and that is bhakti. So Adi Shankaracharya, in his commentary on the second chapter of Bhagavad Gita, says, Gyan Yukt Karma hi bhakti hai. These are three marg, but they are not distinct and separate from each other. Mile hue hai. So Gyan Yukt Karma. So Guru Gobind Singh Ji, in fact, is a hugely extraordinary individual. You see, he combined the three margas, Gyan, Karma and Bhakti. Gyan, Karma and Bhakti. He composed philosophical poetry. He composed, for example, Ram Avatar, Chandi Diwar. He composed a composition for Durga, Chandi, all warlike goddess. And he composed an abstract poem on Brahman, the concept of Brahman. It is Akal Stut, Guru Gobind Singh Ji ka hai. मतलब अकाल की स्तुति, अकाल क्या है वो फिर हम जब बाबा नानक पे आएंगे तो then we will see. अकाल स्तुत,
and then he translated Bhagavad Puran into Punjabi, Lok Bhasha. भाखा दियो बनाए, कथा भगवती की भाखा दियो बनाए, उसकी कथा मैंने भाषा में बना दी, लोक भाषा में. Great thing. The knowledge which is esoteric, which is enshrined in the Grantha, you distribute to the people in their language, Lok Bhasha mein. And he was a great poet. Mitr Pyare Nu Hal Muridan da Kehna. Those great poems, which we included in when we prepared a 2-volume course for class 11 and 12 CBSE 2010. कभी आपको टाइम मिले, फ्री डाउनलोड है वो, CBSE की वेबसाइट पे जाइए, KTPI लिखिए, KTPI, नॉलेज ट्रेडिशंस एंड प्रैक्टिसेस ऑफ इंडिया, 2 volumes. उसमें in the first, second volume, there are 2 modules on literature. और देखने वाले हैं, you will really love them, enjoy them, because there you see we have given Indian literature. We have begun with Andal, the 6th century Tamil Bhakti poetess, 6th century. She was Proto-Meera, the girl who said that I'm already married to Lord Ranganatha, you see. And वो बड़ी लंबी कहानी, उसमें चले गए तो फिर ज्यादा लंबा दूर चले जाएंगे, फिर आप शायद वापस भी नहीं ला पाओगे. इसलिए आंदाल से शुरू करते हैं. और गुरु गोविंद सिंह भी की भी पोएम है, गुरु नानक जी भी की है, गुरु गोविंद सिंह भी है, शाह हुसैन भी है. शाह हुसैन 16th century के सूफी पोएट थे, लाहौर के. And we have, of course, Mirza Ghalib also there. And we have extracts from the Prakrit poem Gatha Satasai. 1st century AD की 700 quatrains, 4 लाइनों की sentence stanzas हैं, 700, and they are all about women, women's life, all the different aspects of life of women, what they enjoy, what they suffer, how they endure, and happiness and all that. Gatha Satsai. कभी मौका मिले वो आपको मिल जाती है, हिंदी में भी मिल जाती है, वो वैसे प्राकृत में लिखी थी. इट वाज ए प्राकृत टेक्स्ट, गाथा सत्सई. उसे उसकी भाषा में बोला जाता है गाहा सत्सई, but it was gatha satasai. That is what we in Sanskrit we call. So Govind Singh ji having combined, and then I came to this KTPI in order to give you an example of Bhakti poetess Andal. And Bhakti movement in India, I'll come to that again, but Bhakti movement in India started somewhere around 1st century with Shangam literature in Tamil, and even today the Bhakti is the major Indian mode of compositions. Even today, bhajana, kirtana, like this. Of course, we are talking of India, of Bharatvarsha and not India. That is not metropolitan India, but the India which is away from these big cities. And you don't have to go far. If you are in Delhi, just move 70-80 kilometers out of it, and you are in another country. You are in a different country with different culture, different values, and all that. So Guru Gobind Singh Ji combined the 3 margas. He was a great poet, I would say, great poet, Mitr Pyare Nu, and he also wrote on the story of Laila Majnu, the great love story. Heer Ranjha, not Laila Majnu, Heer Ranjha. And then he was a warrior. He was an extraordinary warrior, with 40 people fighting an army of 1 lakh. You see, great warrior. And he was a poet, a philosopher, a saint, and a warrior. 4 in 1. 3 तो आपको मिल जाएंगे, 3 in 1 तो मिल जाएंगे. पर गुरु गोविंद सिंह जी जैसे 4 in 1, you can't think of another person in the world. So great poet, great. He was the movement from Guru Nanak Ji, or because he was a warrior, he acted. तो ज्ञान से लेके कर्म से होते हुए भक्ति मार्ग तक गुरु गोविंद सिंह जी का. और this is the
In fact, you see how in the 10 gurus, in the 10 gurus, Movement 10 gurus, you have in a capsule, in a capsule, the entire substance of Indian history of ideas, Indian thought, and so let me now go back. Let me now go back, and in the abstract that I circulated, you see there were a few things which I have drawn attention to. I said that there is a fourth of the systems of faith, belief that evolved in India. Fourth, that is in sequentially fourth, the youngest belief system of all. देखिए, in the world there are two knowledge cultures only. दुनिया में दो ही ज्ञान की परंपराएं हैं. Only two knowledge cultures, and one of them is Abrahamic, जिसे मिडल ईस्ट का कहें. मिडल ईस्ट का एक मिडल ईस्ट का भी एक कॉर्डरन है जहां पे बहुत ज्ञान का सृजन हुआ है. वो जो इजराइल और अरब कंट्रीज, ग्रीस, जो यूनान और ये मिडल ईस्ट का एरिया, वो जो एक एरिया, वहां भी बहुत ज्ञान का सृजन हुआ. और दूसरा हमारा ये भारत खंड, अगर विष्णु पुराण, इफ यू रीड विष्णु पुराण, you have the Bharat Khand in that described. India is a distraction. Remind me to come back. You see, India has been geographically very well defined by God. This is the only country which has been geographically defined by God. हिमालय से लेके सिंधु सागर तक, हिंद सागर तक, और सुलेमान कीरतार ड्राई हिल्स से लेके म्यांमार की ग्रीन हिल्स तक, ये जो प्रदेश है ये भारत खंड है. तो इस ज्योग्राफी, इसलिए आवर वर्ड इज देश. देश इज ए स्पेशल टर्म. ये नेशन तो शब्द जो है हमने बाहर से ले लिया, हमारे को अप्लाई नहीं करता, क्योंकि नेशन कॉन्सेप्ट जो है ये यूरोप का है. यू नो, बिस्मार्क का जो एम्पायर टूटा, ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर 1881 में, तो यूरोप ब्रोक अप इनटू स्मॉल प्लेसेस. ओके, उनमें एक भाषा, एक धर्म, एक जाति, नेशन. तो नेशन का क्या डेफिनेशन है? एक भाषा, एक धर्म और एक जाति. तो हमने भी अपने स्कूलों में, कॉलेजों में गिलक्रिस्ट और गार्नर से यही चीजें पढ़ी. तो वही पढ़ के हमारे जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन लिखा वो भी यही पढ़े हुए थे. तो उनको तो बड़ी चिंता हो गई, अरे बाबा इंडिया तो नेशन ही नहीं है. Rather than thinking that the definition is wrong, not applicable, they thought the country is wrong. We have to become a nation. So आप बड़ा सुनते हो ना, nation building and nation making. What do you mean by that? I mean, we have a doubt whether we are one country. But Herodotus, who wrote a history of the world in 4th century BC, he had no doubt that India is a country. Hyun Sang, who came, all the Megasthenes who came, they have no doubt. The Middle East people, who always refer to this place as Hindustan, Sindh Nadi के दूसरी तरफ का इलाका. You see, they have no doubt. But हम लोग तो, thanks to our education, we have learnt nothing except doubting ourselves, skepticism about ourselves. So only two knowledge cultures in the world. I was talking of that. One in the Middle East, जिसको हम तीन शब्दों से डिस्क्राइब करते हैं: अब्राहमिक, सेमिटिक, हेब्राइक. एक अब्राहम तो एक सेंट था, और सेमिटिक रेस है, और हेब्राइक पीपल हैं, हिब्रूज, द जूइश पीपल. तो तीनों ऑब्जेक्ट करते हैं. जब आप नाम लेते हो तो बड़ा बहस होती है, प्रॉब्लमेटिक हो जाता है. In my introduction to the Encyclopedia of Hinduism, when I wrote that introduction,
and I made this observation about the knowledge cultures being two and one knowledge culture this. I got letters from the rabbi, I got the letters from the top Roman Catholic priest and others, about using these terms and all that. But then I think Semitic by and large, but even that we gave up. We said monotheistic knowledge system, monotheistic knowledge system, Middle East ka, monotheistic. There is a difference between monotheism and monism. Monism, ये समझने की बात है. Monotheistic means एक ईश्वरवाद, एक ईश्वरवाद, एक ही ईश्वर है बस. There is only one God. You get that? And monism is that faced with multiplicity in anything, our mind searches for a unifying principle. Unifying principle. अब जैसे इंग्लिश ग्रामर में, ग्रामर इंग्लिश की ग्रामर में हम कहते हैं चिल्ड्रन, वो कहते हैं फिश, चाइल्ड चिल्ड्रन, फिश, बॉय बॉयज, बैट्स. सा, जा, एन और जीरो, ये चार चीजें हो गई. पर ये चार क्या हैं? प्लूरल मार्कर. तो वो इसे प्लूरैलिटी. ये मोनिज्म है, ये मोनिज्म है. और यही हमारा जो अद्वैत है ना सिस्टम, फिलॉसफी का अद्वैत सिस्टम is a monistic system. It has nothing to do with whether God is one or two gods. It's an intellectual principle of unifying, of finding commonality in multiplicity, reducing multiplicity, making sense of multiplicity. Anyways, so you see, the Middle Eastern system is an one God system. One God system. And the other knowledge culture, there are two knowledge cultures in the world. One is this, Abrahamic, Semitic, Hebraic, / monotheistic. The other is the Vedic knowledge culture. Vedic, हमारे यहाँ वेदों से जो निकली है. Vedic knowledge culture is multi, देवी देवताओं की culture है. It is not monotheistic. In fact, it is not theistic at all. ये भी समझ, लोगों को आइडिया नहीं है, क्योंकि हम लोग अंग्रेजी पढ़ते हैं, अंग्रेजी में पढ़ते हैं और वे ऐसे करके है ना, एक ही भगवान है और एक ही, तो हम फिर अपने ही धर्म को क्रिटिसाइज करते हैं. अरे पत्थर को भी पूजते हैं, इतने भगवान है, इतने ये है, क्या है ये, भगवान तो एक ही है, और वो दिल में रहता है ना. तो वो जनरली क्या होता है कि दूसरे की जहां जाके रहने लग जाता है कई बार, पर भगवान दिल में ही रहता है. ये हम चीजें सीख लेते हैं. वन, एक ईश्वरवाद, वी थिंक दैट एक ईश्वरवाद इज ए सुपीरियर conception. But if you look closely, there is a first difference here. This is very important difference. One knowledge culture is theocentric, God-centric. And the other knowledge culture is human life-centric, not God-centric. Vedic knowledge system is not God-centric. तो देवी देवता कोई गॉड थोड़े हैं. अब आपके क्या गॉड है, राम या कृष्ण? पैदा हुए जेल में, पाला किसी और माँ ने, और वहां से भाग के कहीं और गए, और अल्टीमेटली वो शॉट डेड बाय ए हंटर. ये भगवान है क्या? What kind of a God is he? और राम अभी स्कूल भी पूरा नहीं किया था, तो गुरुजी ले गए जंगल में लड़ाई करने के लिए. वापस आए, शादी कराई, और पिता ने कहा अब तुम्हें कल राज देना है, तुम्हें राजा बनाना है. और राजा बनाने की बजाय 14 साल के लिए जंगलों में भेज दिया. 14 साल जंगलों में घूमते रहे. घूम घाम के आए, राज धर्म निभा रहे हैं, किसी ने एक आक्षेप कर दिया बीवी पे,
और जो वाइफ 14 साल जंगल में रही इतनी निष्ठा के साथ, उसका त्याग कर दिया राजधर्म में, और त्याग कर दिया। उसके बाद त्याग किया। लोग कहते हैं जी ये जो हमारे यहाँ फेमिनिस्ट थ्योरी बड़ी पढ़ी जाती है ना, और लड़कियों को उकसाया जाता है कि भाई बड़ी पैट्रियार्की है, फलाना है, ये वो है। परंतु आप देखिए, 5 सीता के बराबर लक्ष्मण भाई था। एक लक्ष्मण भाई 5 सीता के बराबर था। उस लक्ष्मण ने, जब लक्ष्मण को राम ने पूछा, वो सोने के वो मिले, ये कंगन मिले, कंगन, ये बाजूबंद, तो रामचंद्र जी लक्ष्मण से पूछा ये तुम्हारी भाभी क्या है ना? उसने क्या जवाब दिया रामायण में कि मैंने तो उनके पैरों से ऊपर कभी देखा ही नहीं, मैं तो उनके पैरों की पैजेब पहचान सकता। उस लक्ष्मण को सीता ने कहा, जब राम गए वो स्वर्ण मृग के पीछे और आवाज आई, हे राम बचाओ बचाओ, तो उन्होंने कहा जाओ जाओ तुम्हारा भाई ट्रबल में है। लक्ष्मण को पता था मेरा भाई तो ट्रबल में हो नहीं सकता, पर उसने मना किया। तो व्हाट सीता सेड कि तुम्हारी नजर खराब हो गई है मेरी तरफ, तुम जा नहीं रहे हो। उस भाई को जिसने कहा मैंने तो भाभी के पैरों के ऊपर कभी देखा ही नहीं, तो मैं ये तो पहचान नहीं सकता। तो लक्ष्मण रेखा तो सीता ने उन शब्दों से ही पार कर दी। वो लक्ष्मण रेखा जमीन पे लगी हुई रेखा नहीं है सिर्फ, वो लक्ष्मण रेखा पार कर, उसकी कीमत तो चुकानी पड़ेगी ना, उसको उस कीमत तो चुकानी पड़ेगी, और चुकानी पड़ी, और वो कीमत चुकाई भी। तो उस लक्ष्मण भाई का भी राम ने त्याग किया। आप वाल्मीकि रामायण पढ़िए, भाई का त्याग किया, और वो इतना इतना उनको कष्ट हुआ कि उसके बाद रामचंद्र जी ने जल समाधि ले ली सरयू नदी में। ही वॉक्ड इनटू द रिवर। तो ये कोई भगवान है आपके? ये क्या भगवान है? इनकी जीवन तो ऑर्डिनरी ह्यूमन लाइफ से भी ज्यादा दुखी रहा, दुख वाला रहा। सो प्लीज कम बैक टू माय पॉइंट। The one knowledge culture is theocentric, God centric, but our knowledge culture, अब लोगों को गलतफहमी है, हमारे यहाँ कोई धार्मिक ग्रंथ नहीं है, वेद धार्मिक ग्रंथ नहीं है, दे आर नॉलेज टेक्स्ट। आप इसीलिए यू फाइंड फ्रॉम डे वन देयर आर पीपल हु abuse the Vedas, because we don't believe that it is the physical book which is important. It is not the physical book. आदि शंकरा says ये जो जिल्द है वे नहीं है, उसके अंदर जो शब्द राशि है वो भी नहीं है। Even those words are not the substance. It is what the words indicate. वो शब्द किसका संकेत करते हैं, जिस ज्ञान का, वो है वो ग्रंथ। ग्रंथ वो है। अब गुरु गोविंद सिंह जी बेचारे अचानक एट द एज ऑफ 40 उनको पठान ने स्टैब किया। अब 4 बेटे थे, वो 4 शहीद हो चुके थे, कोई बेटा नहीं था। गुरु परंपरा में आगे बेटा गुरु बनता है। तो उनको पूछा गया था कि अब गुरु कौन, वो ही वाज ब्रीदिंग हिज लास्ट, कि गुरु कौन होगा? तो उन्होंने कहा गुरु माने ग्रंथ। अब ग्रंथ आपका गुरु होगा। अब ग्रंथ का मतलब जिल्द नहीं थी, पर हमारे मैं पहले ही कह दिया कि सुनने वाले ध्यान रखें कि मैं आधे से ज्यादा सिख हूं। मेरी 10 जनरेशन में 6 सिख हैं, मतलब हम बड़े भाई से डिसेंडेड हैं। पंजाब के हिंदू अपने बड़े बेटे को सिख बनाते थे फॉर द डिफेंस ऑफ धर्मा। मैं खुद बड़ा था, मैंने बचपन से आई वाज टेकन, बिकॉज आई वाज इन अमृतसर, आई वाज टेकन टू दरबार साहब। मेरी माँ ने सरोपा जो पीला कपड़ा देते हैं, 23 years she preserved it, and I have worn a kada from day one. So when I am talking, people should not think that I am a person who is not a Sikh. I am a Sikh. I am a Sahajadhari Sikh. I am not a Keshadhari Sikh. You see, and I am saying that गुरु जी ने कहा गुरु मान्यो ग्रंथ, पर ग्रंथ का क्या मतलब है? ग्रंथ का मतलब जिल्द नहीं है। ग्रंथ का मतलब वो जो वर्ड्स प्रिंटेड है वो नहीं है। ग्रंथ का मतलब है जो उसमें जो ज्ञान है, वो ज्ञान आपका गुरु होगा, वो ज्ञान आपका गुरु होगा। और उस गुरु उसमें उस वो जो ज्ञान है, वो ज्ञान ह्यूमन वेलफेयर के लिए है, फॉर द वेलफेयर ऑफ पीपल, लोक संग्रह के लिए। तो देखिए, मैंने पहले कहा
कि दो कल्चर में चौथा जो सिस्टम निकला, एक पहले बात और बता दूं, अगेन कंटेंशियस, इट्स नॉट कंटेंशियस. So, I lapse into Hindi. In fact, in JNU, my students used to say कि सर की क्लास तो कंपलसरी है कि सब्जेक्ट आए ना आए पंजाबी जरूर आ जाएगी, क्योंकि आई यूज्ड टू देन स्पीक पंजाबी आल्सो. आई विल फ्रॉम हिंदी, इंग्लिश टू हिंदी, हिंदी टू पंजाबी. लिटिल गिव मी a little more time and I will start speaking पंजाबी. तो वो पंजाबी आ जाती है. थियोसेंट्रिक वर्सेस ह्यूमन लाइफ सेंट्रिक, दिस इज अ डिफरेंस. जो मिडिल ईस्ट की नॉलेज कल्चर है, इट इज गॉड सेंटर्ड. व्हाट डज इट मीन? दैट द ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज इज गॉड. गॉड एंड गॉड इन रिलेशन टू मैन. ह्यूमन बीइंग का क्या कर्तव्य है गॉड की तरफ, गॉड की नेचर क्या है. entire not that it is a small subject. No, in fact, if you pursue the Christian scholarship of the monasteries in the Middle Ages, great thinkers, Saint Augustine, Thomas A. Kempis, so produce great thought. But it is important, it was God-centered. That is why the West had to have a Renaissance. Renaissance में क्या हुआ? God was replaced by man. उसे वो आजकल कहते हैं God died. God was replaced by man, and the means of knowledge, epistemology, shifted from book, Bible, to reason. Francis Bacon, one is empiricist, Francis Bacon, and the book on method is a rationalist. So experiment and reason. So they had to have a Renaissance because the focus was God and man's relationship to God. But it is more important to worry about human life, human sukh dukh, which was always the focus in our tradition. I was saying that our texts are not religious texts, they are knowledge texts. In fact, in my lectures, in my writings, in my introduction, I always say knowledge texts. Gyan Granth hain, Ved Gyan Granth hain, and of course great poetry. अब भगवत गीता पे लोग से धार्मिक ग्रंथ है. क्या धार्मिक ग्रंथ है? आप पढ़ के देखिए. उसमें एक सियाना आदमी या एक बहुत चतुर आदमी एक पंजाबी को कन्विंस करता है कि तुम्हें लड़ना चाहिए. और भगवान कृष्ण जो है वो तो किंतु परंतु प्रदेश के हैं. किंतु परंतु प्रदेश उत्तर प्रदेश के लोग किंतु परंतु बहुत करते हैं, है ना. बट हाउएवर, इफ बट हाउएवर. पंजाब के लोग नहीं करते. वो या ये बस इधर या उधर, कोई बीज वज की बात नहीं होती. तो अर्जुन तो वहां का था. सो इसलिए वो कहता भी है, when he says के sometimes you say knowledge is superior, sometimes you say action is superior. तो मुझे you tell me one thing which is superior. He says, then Krishna says, and what he says confuses him more. कि वैसे दोनों में फर्क नहीं है ज्ञान और कर्म में. Then he says, अच्छा बाबा, अब आप मुझे ना कुछ प्रत्यक्ष दिखाओ ताकि मैं देखूं कि भगवान क्या. तो विराट रूप दिखाते हैं, but that is an illusion he creates. Illusion है. So then he says कि ठीक है, where should I recognize you? आप तो खत्म कर illusion. वो जो बाहुबली पिक्चर का वो जो नियाग्रा फॉल्स है, वो तो illusion है ना, वो है थोड़ा. It's an illusion. तो विराट रूप भी illusion था, वो निकल गया. So he says, tell me how to recognize you. And then there is a beautiful chapter which is pure poetry. He says, wherever you see perfection, there I am. स्थिर रहने वालों में हिमालय, बहने वालों में गंगा, छंदों में गायत्री, मौसमों में वसंत ऋतुओं में वसंत, और महीनों में मार्गशीर्ष, और छल करने वाले का छल मैं हूं. Perfection. Wherever there is perfection, I am that. Every perfection is. So you see, these are Gyan Granth. These are not religious. We have preserved them much better than the West could, for example, preserve Shakespeare in 500 years, in spite of the printing press. Because it's okay, Bible has been preserved, but Bible also is a translated text. The original in Hebrew, then in Greek, then in various languages. But the preservation of Vedas, 5,000 years, intact, एक वर्ण भी इधर उधर नहीं हुआ.
what great sciences we developed, sciences, phonetics, etymology, grammar. Without them, we could not have preserved these texts. But why did we preserve them? Not because they are religious, but because they are knowledge texts. And the subject of knowledge was not God, is not God. Devi Devta. If you read the hymn to goddess Usha, dawn, in Rig Veda, it's a hymn in praise of a beautiful girl. You know, if you read Rig Veda on the goddess of dawn or goddess of speech, Vak, you know, you read these hymns. So these are books have to be read both as poetry and as Gyan, as knowledge texts. So human life. So the two knowledge, again, another difference, very important difference. Middle Eastern culture is God-centered, monotheistic, Ek Ishwar. What is the nature of that God? That God is Nirakara, one God and formless God. Formless God, formless. Uski form nahi hai. No, it is only an idea. It's not an idea that takes the shape of an idol. Ye Nirakar hai. But the logical fault line is that the Hebraic God is a formless God, but not an attributeless God. निराकार है पर निर्गुण नहीं है. निराकार है पर निर्गुण नहीं है. अब निराकार और सगुण में लॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट है. इसलिए स्पिनोजा 17th century Spinoza in his book Interpretation of Scripture says Hebraic God is an angry God. No, anger is a human problem. Anger is not a property of a formless God. So logically, in our system, we have a cafeteria approach to God. Because we are human life centered, we look at this conception of a powerful entity beyond us, also in terms of how it relates to our happiness. Our happiness. So ब्रज के लोग कहें हम कृष्ण के, कृष्ण हमारा, हम तो वह का घोड़ा बना ले, हम तो कृष्ण का घोड़ा बना ले. So you see, the God is also subsumed in the service of man. In the service of man. Not that the man has to, कि भगवान जो है वो आदमी के चालान काट रहा है. No. आदमी भगवान के चालान काटता है यहाँ हमारी संस्कृति. ये if you ever go to Jagannath temple, you will find devotees sitting outside and abusing God. अरे इतना भोग लग रहा है, तूने इतना खा रहा है और मैं देख भूखा बैठा हूं बाहर. और तो फिर कोई some pilgrim who is there, he says, अरे बाबा, don't abuse God, ये लो चावल खाओ. Because वहां प्रसाद भी चावल का ही चढ़ता है. So you have to understand your civilization, your culture. It is human life centered. It is not God centered, not theocentric culture, human life centric culture. So what do we have in place of God? तो मैंने कहा कैफेटेरिया अप्रोच टू गॉड तो मैंने बता ही दिया. अगर आप भगवान में नहीं मानते, जैसे चारवाक नहीं मानते थे, जिनको हम लोकायत कहते हैं, वो नहीं मानते थे, तो उनको भी ऋषि माना गया. उनको भी हम ऋषि कहते हैं. चारवाक कहा करते थे कि अरे भैया, अगर इस नदी में स्नान करने से तुम्हें मोक्ष मिल जाता है तो तुम इसे डूब ही जाओ इसमें. फिर व्हाई डोंट यू ड्राउन योरसेल्फ? इटर्नल मोक्ष मिलेगा. ये आज से 4000 साल पहले की बात है, ये आजकल की बात नहीं है. तो वी हैव हैड स्केप्टिक्स, materialist skeptics from day one. Day one we have had materialist skeptics. So this is it's a you don't believe in God, don't believe, no problem. No problem. You will find many foolish people saying मेरा बच्चा बड़ा लायक है, वो कह रहा था मैं भगवान में नहीं विश्वास रखता. अब ये भगवान में विश्वास ना रखना कोई अकल की बात नहीं है कि पता आपको कुछ है नहीं, दांत आपके निकले नहीं और आप भगवान में विश्वास नहीं रखते. But as a knowledge principle, not being able to believe in a God who has created the universe, it's a different matter, isn't it? So आप नहीं मानना चाहते, मत मानिए, no problem. You want to believe in one God, one powerful force, all right. Brahman, माने ब्रह्मन की कॉन्सेप्ट है, ब्रह्म की. You want to believe in two, Sitaram, Radhe Krishna. You want to believe in many, there are 51 Shaktipeeth, 51 goddesses are there, उन्हें मान लो. Multiple. If you don't know, you want to believe in your own God, तो नदी से पत्थर उठा के ले आओ, उसको रोज साफ करो, उसके आगे फूल रखो, उसको रोली लगाओ,
और फिर वो स्थान पे पड़ा पड़ा वहीं पे, उसको हिलाना नहीं, वो सिद्ध हो जाता है, वही भगवान बन जाता है। वो भी छोड़िए, यू योरसेल्फ आर ए पोटेंशियल गॉड। हम सब ब्रह्म के अंश हैं। कार्लाइल सेज इन साटर जाटस, and Carlyle was deeply influenced by Indian culture. He says, who am I? I am a sprinkle of the divine. I am a sprinkle of the divine floating in the ether of eternity. I am a fragment of the divine, sparkle of the divine. I am a sparkle of the divine floating in the ether of eternity. मैं तो अंश हूं। आजकल लोग अस्मिता की बड़ी लड़ाई लड़ते हैं, आइडेंटिटी की। Who am I? इतनी बड़ी आइडेंटिटी थी हमारी कि हम ब्रह्म के अंश हैं। अब इन लोगों ने, थ्योरी वालों ने काट काट के मुझे कपूर बना दिया, खत्री बना दिया, पंजाब का बना दिया, पाकिस्तान पंजाब का बना दिया, तो कहाँ तो मैं ब्रह्म का अंश था। अब मेरी आइडेंटिटी ये रह गई, इतनी सी बस, लिमिटेड। इसी अस्मिता का भी बड़ा प्रकोप है ना, बहुत लोग झगड़े करते हैं आइडेंटिटी को लेके भी। एनीवेज, so you see the difference between God centered, आपको, अब you're yourself a God. So you know in China you have serial Buddhas, 10,000 बुद्ध हैं, because every person is a potential Buddha, Bodhisattva. Every person in Jain system is a potential Jina. Potential Jina. He can himself become a Tirthankar. You can yourself become a Buddha. You can yourself become a Bhagwan. After what is Bhagwan? Bhagwan is the perfection. Perfection of anything. You evolve and you achieve perfection and you become a God. इसीलिए हमारे ग्रेट ग्रामेरियन पाणिनि, लोग उसको कहते हैं भगवान पाणिनि। वेद व्यास, भगवान वेद व्यास, ये वो नॉन ह्यूमन बींग्स, और जिनको हम भगवान कहते हैं, और हम उनकी तो हमें बर्थ भी पता है, डेथ भी पता है कि पैदा कब हुए और मरे कब। सो बट दे वर परफेक्शन। Ram for his Maryada, and Krishna for his action, दोनों में बड़ा भेद है। राम को पता नहीं था कि वो भगवान के अवतार हैं, because avatar is not God. Avatar is a form, manifestation of the energy, which is supreme energy. उसकी एक manifestation एक human being में आती है. That human being assumes the proportion of a God. So that is extraordinary individual who becomes. तो ये दो बेस थे। तो ज्ञान, तो गुरु नानक जी ने अब ज्ञान मार्ग लिया। तो देखिए हमारे यहाँ जो कॉन्सेप्ट है, गॉड नहीं है, ब्रह्मन है। ये हमारे the key questions of knowledge, Indic knowledge culture, Vedic knowledge culture, it produced 4 systems. The Middle East knowledge culture produced 3 systems: Judaism, Christianity, Islam. And our knowledge culture produced 4 systems: Sanatana, Jaina, Bauddha, and Sikh. Jaina, Sanatan, Bauddha, and Sikh, right? 4. And Sikh came last, youngest, as I said, youngest. And each system, each system has its own properties. For example, Sanatan system believes in gods and goddesses, believes in powers which are beyond human, extraordinary powers, beyond human, and is also maybe believes in Ishvara, Paramatma. Of course, because we have several terms, so we are not, हम एक ईश्वरवादी नहीं हैं, one God people नहीं हैं, but there are several words we have: Ishwar, Paramatma, Brahman, Bhagwan, Bhagavad Tattva, so on. So we are always searching for the principle which underlies this whole creation, because the fundamental question is creation. That is, in the context of this universe, we have to think of a concept like God, because the one God of the Middle East cultures is a God who is a creator. He has created this universe and he is outside it. वो उसने इसे बनाया है और वो बाहर है इसके. He is a creator.
ना, बाहर बैठ के देखता है उसको, एंड so he is beyond. But our conception, we don't have a creator outside the creation. We have a Brahman. Brahman, Upanishadic concept. The six theistic systems we have, Mimamsa, Sankhya, Yoga, Nyaya, and Purva Vedanta. एक मिनट, सांख्य योग, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा, और वैशेषिक और न्याय, न्याय वैशेषिक, 6 सिस्टम है। इनका पेयर्स हैं। जैसे सांख्य और योग, सांख्य जो है इट डील्स विद ऑन्टोलॉजी, तत्व, एंड योग डील्स विद एपिस्टेमोलॉजी, हाउ टू अंडरस्टैंड दैट, मीन्स ऑफ नॉलेज। इसी तरह मीमांसा, उत्तर मीमांसा इज अबाउट द ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज, and Vedanta is about the means of understanding. And Nyaya, Vaisheshik is the Tattva, ontology, and Nyaya is the epistemology, how to say. In every system, there's the system, even in the Jain system, in the Bauddha system, I'm not talking of them, not going into them, not very deeply familiar, although one can talk about them, but every system has a system of tattvas, ontological elements, or priori elements which are there, right? Those in Vaisheshika is a purely materialistic philosophy. You must know, हम इनको कहते तो हैं थीस्टिक, आस्तिक दर्शन है 6, पर इन 6 आस्तिक दर्शनों में 3 में भगवान की कैटेगरी है ही नहीं, भगवान है ही नहीं आस्तिक दर्शनों में। मीमांसा में नहीं है, सांख्य में नहीं है, वैशेषिक में नहीं है। योग में ईश्वर है, पर योग का जो ईश्वर है उसकी मेमोरी नहीं है, स्मृतिहीन। अब स्मृतिहीन, पंडित भगवत शास्त्री जी कहते थे, स्मृतिहीन ईश्वर ईश्वर नास्ति। वो काहे का भगवान है? हमने उनको सुबह प्रेयर करी कि हमें टिकट नहीं मिल रही, रेलवे की टिकट दिला दो, वो भूल ही गए कि हमने कोई प्रेयर करी है। तो प्रेयर ही, अगर जिस भगवान को, भगवान है ही नहीं अगर उसकी मेमोरी नहीं है, ईश्वर नास्ति, तो बड़ा डाइल्यूटेड, ल्यूकवार्म फॉर्म ऑफ गॉड, ईश्वर। तो 6 में से 4 में वी डोंट हैव द कैटेगरी, राइट? तो वैशेषिक में गॉड नहीं, बट वैशेषिक हैज 24 ऑन्टोलॉजिकल, भौतिक एलिमेंट्स, जल है, हवा है, इस तरह 24। Sankhya divides them into 2, and makes 2 varg, 2 sets. प्रकृति के 2 सेट्स बन जाते हैं, और प्रकृति और पुरुष, एनर्जी, you see, he divides into प्रकृति and matter and energy. सांख्य का, that's why Sankhya is considered the supreme philosophy of India, and it is one of the oldest. And by the way, इसका जो प्रवर्तक थे उसका नाम कपिल था, not this Kapil of course, but my grandfather named me after the Sankhya Kapil Muni. So the Sankhya says matter and energy. So the whole universe is made up of matter, and there are 2 things, matter and energy. But see, our rishis, thinkers, they said, but then energy is not independent of matter. Energy exists in matter. Energy is immanent in matter. तभी तो आप एटम को तोड़ते हो तो एनर्जी निकलती है ना. When you break up the atom, there is an energy explosion. तो ये हमारे ऋषियों ने इतना great insight that energy is in matter. So they came up with the concept of Brahman. What is Brahman? Energized matter. Please ध्यान से नोट कर लिए. Brahman is energized matter. And our view, इसीलिए ब्रह्मन से हमारा शब्द क्या है यूनिवर्स का? ब्रह्मांड. ब्रह्मांड, एग, मतलब ब्रह्मन से ही निकला हुआ, निकला हुआ. और एग की एग्जांपल से उसकी शेप इलिप्टिकल है. If you read modern physics, postmodern physics, the modern people believe that the universe is elliptical. Elliptical. You see, it's an expanding universe. It is elliptical. So Brahmand जो है, it is an extension of the
of the Brahman. तो this कैसे, जैसे मकड़ी में से जाला निकलता है और मकड़ी अपने जाले में ही रहती है, इसलिए ब्रह्मन is immanent in the material universe. So the whole universe is nothing but energized matter, pulsating matter, जैसे लावे का समुद्र होता है. And just as in a stream of water, this is Adi Shankara, just as in a stream of water forms arise and collapse, form, wave, bubble and froth, बुलबुला, लहर और फेन. आप खड़े होते हैं, देखो कितनी बड़ी, देखो कितनी बड़ी लहर आ रही है, and by the time you look, the wave is gone. वो जल में वापस चली गई, जल में लीन हो गई. So you and I are forms that have arisen in this pulsating universe. I took form in 1940. I don't know when I will disappear like a bubble or a wave, you see. So we are all forms that arise in this pulsating universe, everything, and they all go back. Forms dissolve. So form is a transient, but the tattva, substance is eternal. Form is transient, but the substance is eternal. That's why the phoneticists, हमारे जो phoneticists थे, जो phonetics शिक्षा वाले जो थे, they thought very poorly of grammarians. अरे तुम तो बेकार के, क्योंकि तुम तो फॉर्म से डील करते हो, फॉर्म से, और फॉर्म तो बदलती रहती है. बॉय का बॉयज हो गया, गो का गॉन हो गया, उसका हेड हो गया, फॉर्म बदल गई. पर वी डील इन सब्सटेंस, साउंड से ही तो बनते हैं ये शब्द सारे, हम समझते हैं. तो शब्द ब्रह्म की जो संकल्पना है कि जो अनादि, ये ब्रह्मन की है. देखिए भर्तृहरि फिर ब्रह्मन की कॉन्सेप्ट को भाषा में ले जाते हैं कि ब्रह्मन अनादि. अनादि का मतलब ये नहीं कि जिसकी बिगिनिंग नहीं है, जिसकी बिगिनिंग हम जानते नहीं, पता नहीं कब शुरू हुआ. अनंत, जिसका अंत हमें नहीं पता कब होगा. अनादि अनंत और अद्वितीय, एक ही है, दूसरा नहीं है, एक ही है, अद्वितीय. अनादि अनंत अद्वितीय और इमानेंट, परवेसिव है, व्याप्त है. व्याप्ति उसकी वर्चू है, व्याप्ति, वो सब में व्याप्त है, राइट. एंड दिस ब्रह्मन, भर्तृ जब उसमें लेते हैं तो शब्द जो है, शब्द ब्रह्म की कॉन्सेप्ट है. तो हमारे थिंकर्स कहते हैं कि जो वैयाकरण थे, ग्रामेरियंस, दे वेंट टू द सी कोस्ट इन सर्च ऑफ कौड़ी शेल्स, एंड दे एंडेड अप बाय फाइंडिंग ए पर्ल. मोती मिल गया उससे. कौड़ियों से शुरू हुए, मल्टीप्लिसिटी से शुरू हुए, और उसमें एकत्व, एक मोती, पर्ल मिल गया. तो पर्ल है शब्द ब्रह्म. क्योंकि शब्द जो है, शब्द जिसको हम कहते हैं, व्हाट इज ए शब्द? लाइक ए वर्ड लाइक कैट. अब कैट जब हम लोग बोलते, मैं ही बोलता हूँ, when I have cold, then the way I speak cat becomes cat, because there is a cold, and the Americans will speak it in a different way, but it will be spoken, pronounced in 100 ways. But every time we will understand that the expression, the token, is an expression of that type, that word. That word, what is word? That which when uttered, brings to your mind the cognition of an object or an idea. That which when uttered brings to your mind the cognition of an idea or an object is the word. शब्द वो है, शब्द वो नहीं जो लिखा हुआ है या छपा हुआ है या हमने बोल दिया. ये जो हम बोल रहे हैं, हम एक शब्द को बोल रहे हैं, वो शब्द यहाँ है, वो सबको पता है, शेयर्ड है. तो चाहे मैं गलत, इसलिए people who stammer, when we listen to them, we don't point out that you are stammering. We understand them. In stammering also we understand what they are saying. We understand. So every token is an expression of a type. And that type is a conceptual. Anyway, so Brahman is that which informs the universe. It is inside the, that is why it is not outside. It's not outside. That's why for us, the entire creation is a sacred.
सब सेक्रेड है, क्योंकि सब में भगवान इमानेंट है, बाहर नहीं है। इसीलिए हम नहीं कहते कि दी फिश या वाटर। आपको बिहार में इधर या कहीं गांव में आप जाएंगे, आदमी भूखा होगा, उसे रोटी नहीं मिली, उसके सामने चिड़िया कूद रही होगी, पिजियंस खेल रहे होंगे, ही विल नॉट किल देम एंड ईट, ही विल नॉट। यू सी, दैट इज आवर कल्चर, दैट इज आवर सिविलाइजेशन. Life is sacred. Everything is sacred because there is Brahman in everything. अब प्रॉब्लम ये हुआ, तो गुरु नानक देव जी ने इस उपनिषदिक ज्ञान को, जो कि हमारे देश के लोग भूल चुके थे, ऑपरेशन, इन्वेजन और सफरिंग के कारण वो ज्ञान से कट चुके थे और अपने को बड़ा हीन मानने लग गए, कमजोर मानने लग गए, उन्होंने भुला दिया था ज्ञान। गुरु नानक देव जी ने घूम घूम के देश में घूम घूम के इस ज्ञान को पुनः जागृत किया और लोगों के में जैसे रीढ़ की हड्डी वापस डाल दी। वो ज्ञान की हड्डी, रीढ़ की हड्डी डाली उन्होंने घूम घूम के। ये उनको उदासियां कहते हैं, उनकी जर्नीज को कहते हैं उदासी। कई उदासियों में गए, उनको बड़ा उदासी थी, उदासी कि क्यों लोग इतने दुखी हैं। तो फिर घूम के जाके लोगों को ज्ञान बांटना, कथा प्रवचन परंपरा, परिव्राजक परंपरा हमारी बड़ी पुरानी परंपरा है कि लोग घूम घूम के पैदल घूम। आज भी जैनी जो होते हैं, दिगंबर जैनी, आज भी पैदल चलते हैं, गांव-गांव जाते हैं। आपने देखा होगा कि पिलग्रिमेज में लोग के मंदिर जाना है तो 70-70 किलोमीटर पैदल जाते हैं। दे वॉक। सो यू सी, उन्होंने इस ज्ञान को, अब ये उनका, इसलिए उनका जो मूल मंत्र है एक ओंकार, उनका जो मूल मंत्र है वो मैं आई थिंक आई मस्ट ड्रॉ योर अटेंशन टू दैट। एक ओंकार। मैंने आपको बताया भर्तृहरि drew the parallel of the concept between philosophical Brahman or ontological Brahman and the Shabd Brahma, Shabd as Brahma, because Jnanam Sarvam Shabdena Bhasate. All knowledge is constructed in words, and Jagat Bhasha ka vikalp hai. We construct this whole world through our vocabulary, our words. ये लगता है कि बड़ा अजीब है कि ये you see, language is not representative for us as it is in the Western system, that it represents pre-existing reality. No, language constructs the reality. For example, I uttered the word cat. I will again utter the word cat. आप जानते हैं ना बिल्ली, बिल्ली तो जानते हैं, देखी होगी बिल्ली, cat. I utter the word cat. If you ask each other, जो बिल्ली आपने, मैंने cat बोला तो आपके दिमाग में बिल्ली आई, किसी की बिल्ली सफेद होगी, किसी की काली होगी, किसी की ब्राउन होगी, किसी की बैठी होगी, किसी की चल रही होगी, किसी की भयानक होगी, किसी की बड़ी बड़ी स्वीट होगी। तो एक शब्द से कितनी बिल्लियां बन गई? तो शब्द ने बिल्लियां बनाई हमारे दिमाग में। वी आर द नोअर्स, वी क्रिएट द नॉलेज, सो ये जगत, बिकॉज वी डोंट ऑक्यूपाई द सेम स्पेस, नो टू पर्सन्स कैन हैव द सेम अंडरस्टैंडिंग ऑफ थिंग। दो लड़कियां बैठ के कॉफी पिएंगी, एक कहेगी कितनी अच्छी कॉफी है, दूसरे की अरे कहाँ, मैं तुम्हें वहां ले जाऊंगी, वहां कॉफी मिलती बढ़िया। So we don't agree on it because we are the knowers, and everything we construct in our mind on the basis of our own experience. तो गुरु नानक देव जी ने पूरे उपनिषद, जितनी उपनिषदों में ब्रह्मन के ऊपर चिंतन है, उस सारे चिंतन का सार, एसेंस, उनका जो मूल मंत्र है जपजी साहब में पहला, जिसलिए जगह जो भी बाद में गुरु ग्रंथ साहब में शुरू होता है उसी मूल मंत्र से होता है। एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरख निर्भय निर्वैर अकाल मूरत अजूनी साहिबम गुर प्रसाद। I will explain this, and if you understand this, you don't have to read the Upanishads. What is Brahman? Ek Omkar, one. अद्वितीय, प्रश्नोपनिषद में ब्रह्मन को कहा है, दूसरा नहीं है।
अद्वितीय। एक ओमकार, ओम इज आ उ म, आ उ म, आ इज दी, जब बच्चा पैदा होता है वो कुछ नहीं अभी लेटाओ तो वो अपना अंगूठा पकड़ के आवाज जो निकालता है बोलते वो अ जो है वो कोर कंठ का कोर साउंड है। ऊ कंठ से ले ऊ जब बोलते हैं तो आपकी पूरी जो वाक की प्रक्रिया है सारी, इस सारे में पूरा ये यंत्र जितना है आ गया। और म पा फा बा भा म क्लोज। सो आ उ म। अब ये तीन चीजें, ये तीन हमारी साइकोलॉजी में जागृत, जागृत, निद्रा, सुषुप्त, स्वप्न, ना जागृत, निद्रा, स्वप्न, सुषुप्त, तीन साइकोलॉजिकल स्टेज लीडिंग टू द फोर्थ, लीडिंग टू द फोर्थ तुरिया। Three add become Om, Om, the fourth entity. Everything, everything, because these three Kantha say this and U, Kantha this and U, this is all language. Aum, Om, it captures all language, all language. इसी तरह इसी ओम को, इसलिए ओम को अक्षर, अक्षर ए सिलेबल, इट इज ए सिलेबल बट इट इज अक्षर, अक्षर, इसका अंत नहीं, ये बदलता नहीं है, अंत नहीं होता। तो ये जो ओम शब्द है जो कि एंटायर यूनिवर्स है इसमें और जिसको चेंज नहीं होता, बदलाव नहीं होता, ये एक ओम जो है, यही एक ओंकार, यही ब्रह्मन है, शब्द ब्रह्म जिसको भर्तृहरि ने शब्द ब्रह्म कहा। सो इसी एक ओंकार। एंड सत्य नाम, ये असल में मेरे सिख भाई आपस में लड़ते ज्यादा हैं कि हम ये हैं कि हम वो हैं, अस्मिता की लड़ाई ज्यादा लड़ते हैं और श्रद्धा बहुत रखते हैं। हम लोग भी लड़ते बहुत हैं, हमको वेद नहीं पढ़ने दिए, औरतों को वेद नहीं पढ़ने दिए। अरे अब पढ़ लो, 200 रुपए में 4 मिलती हैं, अब पढ़ लो लेके। अब उतना इतना ध्यान, इतनी अकल, इतनी अब कहाँ है तो पढ़ो। इस पर श्रद्धा बहुत है। पर यही सत्य नाम, इसका क्या अर्थ है? एक ओंकार नाम है, क्या ये नाम है उसका? और ये नाम सत्य है, ये नाम ही सच है। और सत्य, सत्य से सत्ता बनती है। जो है, जो भी है, ऑल एग्जिस्टेंस, उसको भी सत्य कहते हैं। तो ये जो एक ओंकार जो है, ये जो ओम जो है, ये जो ब्रह्मन जो है, क्या ये नाम है सारी एग्जिस्टेंस का? Is it the name of all existence? Both the meanings are possible and both are true. Both are true. जो भक्ति मार्गी हैं वो कहेंगे नाम ही सत्य है, तो वो कहते हैं जाप करो, नाम जप करो। गुरु नानक के बारे में भी बाद में सिंप्लीफाई करके बताया उन्होंने, कीरत करो, दूसरों के भलाई के लिए काम करो, नाम जपो, ऑलवेज रिमेंबर हिम एंड वंड खाओ, शेयर एवरीथिंग विद अदर्स, शेयर। और चौथा जो है सेवा, सेवा। गुरु ग्रंथ साहब में 8000 बार सेवा शब्द आता है। सेवा करो, सेवा करनी बड़ी कठिन होती है, सेवा करानी बड़ी आसान है। ओए पानी का गिलास लिया, पर अगर कोई आपसे मांग ले तो ले जाना बड़ा मुश्किल है। सेवा कराना आसान है, करनी बड़ी मुश्किल है। पर हमारे सियाने लोग कहते हैं कि जहां तक हो सके सेवा नहीं करानी चाहिए, नहीं करानी चाहिए। इसलिए माई ग्रेट ग्रैंडफादर, माई एल्डेस्ट ग्रैंडफादर, पंजाब में एक अजीब तरीका है कि मेरे 4 ग्रैंडफादर थे, मतलब माई ग्रैंडफादर हैड 3 अदर ब्रदर्स। सो द एल्डेस्ट ग्रैंडफादर, आई वाज वेरी स्मॉल, ही यूज्ड टू टेल मी सेवा नहीं करानी बेटा, जब तक हो सके अगर पानी चाहिए तो मांगो, उठ, किसी से मत लाओ, उठ के जाके ले, खुद करो अपना काम, सेवा नहीं करनी चाहिए। और दूसरों की सेवा करनी चाहिए। जो लोग दूसरों की सेवा करते हैं उनको भगवान आखिरी दम तक इतनी शक्ति देगा
कि उनको दूसरों की सेवा की जरूरत नहीं पड़ेगी, पर जो सेवा कराते रहते हैं उनको तो फिर सेवा ही करानी पड़ेगी बाद में भी, करते नहीं है। सो चार, ये जैसे उनमें अष्टांग मार्ग है बौद्धों का, तो इसमें तो चार चीजें हैं बड़ी सीधी। सिख धर्म में चार चीजें हैं बड़ी सीधी। दूसरों के लिए काम करो, सिर्फ अपने लिए नहीं। कीर्त करो, गुड वर्क, और नाम जपो, ऑलवेज रिमेंबर। गुरु गोविंद सिंह जी के पास एक बार लोग आए कि ये आदमी जो है बहुत गुंडा है, ही ट्रबल्स पीपल, ही इज ऑलवेज फ्राइटनिंग पीपल, थ्रेटनिंग पीपल एंड ऑल दैट। तो उन्होंने बुलाया उसे, तो उन्होंने कहा व्हाई आर यू डूइंग ऑल दिस थिंग। गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा, डू यू नो that you will be dead after 7 days. Huh? Acha. And he got scared. And then he changed his ways. He stopped fighting, he stopped threatening. And 7 days passed, he didn't die. So he came to Guruji on the 8th day. Guruji, मैं तो मरा नहीं। कहते तुम्हें मरने का डर लगा तो तू अच्छा इंसान बन गया, पर मरना तो तुझे है, ये तुझे भूल गया ना तू। You have to die. So remember this and do the right things. ये एक किंवदंती है, एक एनेक्डोट है गुरु गोविंद सिंह जी के बारे में। तो उनका, so you see, सत्य नाम, एक ओंकार सत्य नाम, this is a, ओम is a good name. उच्चारण करो, इसे तो you must have heard people, ओम ओम, हाँ? और एक ओंकार, एक ओंकार, एक ओंकार, है ना? ओमकार इज ओम का आकार, ये वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। ओम, ओम आयुम, वो तो स्ट्रक्चर है, पर उस स्ट्रक्चर से जो बनती है फोर्थ चीज, जैसे आप अगर खिचड़ी बनाते हो, चावल लेते हो, दाल लेते हो, जीरा लेते हो, हल्दी लेते हो, नमक लेते हो, अगर चारों को अलग अलग पका के खा लोगे तो खिचड़ी बन जाएगी। इकट्ठे करके बनाते हो ना, चार चीजें इकट्ठी करते हो तो एक पांचवी चीज बनती है, वो आकार है, वो फॉर्म है। तो ये जो फॉर्म है एक ओंकार, ओम का आकार, आकार मतलब ये ओम जो है ये आकार है ब्राह्मण का, ब्राह्मण का आकार है। तो अगर ये ब्राह्मण का आकार है जो ओंकार है, तो ये क्या, यही सच्चा नाम है ना, ये सच्चा नाम है, यही नाम है जो सच है, इसलिए नाम लो। या ये नाम है जो भी है उसका, सारी एग्जिस्टेंस का ये नाम है, सारी एग्जिस्टेंस का ये नाम है। कर्ता पुरख, कर्ता, अब कर्ता पुरख में कर्ता नाउन है कि एडजेक्टिव है? कर्ता, कर्ता पुरख, ये भी सोचने वाली बात है, और दोनों से अर्थ बदलते हैं और दोनों ही ठीक है। कर्ता, कर्ता मतलब डूअर, हम लोग डूअर नहीं है, हम लोग करण हैं, एजेंट्स हैं, इंस्ट्रूमेंट्स हैं, हमारे थ्रू वो करवाता है। इसलिए अगर कोई व्यक्ति बहुत अच्छा काम करे, हिंदुस्तान में कोई बच्चा भी, उसे जाके आप कहोगे ना बेटा तूने बहुत बढ़िया काम कर दिया, वो कहेगा हो गया जी, हो गया जी। वो ये नहीं कहेगा हाँ जी देखा मैंने कर दिया, ऐसा नहीं कहेगा, कहेगा जी हो गया, इट गॉट डन। तो कर्ता वो है, ही इज द प्राइमरी डोअर ऑफ एवरीथिंग, जिसकी एनालॉजी हम वीवर या पॉटर से करते हैं, पॉटर से या वीवर से। वो कर्ता होते हैं ना, वो घड़ा बनाना, सुराही बनानी, जो भी बनाना है, जो भी फॉर्म देनी है वो फॉर्म देते हैं। एंड पुरख, पुरुष is a abstract category which is like Atma and Chitta at the same time. That means it is the spirit, it is the energy principle, Ek Onkar, energy principle. And if you take Purukh as physical Purush, then Karta Purush, he is the one who does. See, the doer, the energy, or the agent of doing, the doer, the one who does. These two meanings. Nirbhay, no fear. Fear is a human property. Nirbhay, nirvair,
no where, no hate, no opposition, no enmity, no other, nothing. Nirvaira, nirbhay, nirvaira. Here are the properties. Brahman is devoid of human properties. In fact, when the Upanishads start dividing, और मेरे गुरुजी की अपनी वाणी में 943 हिम्स हैं गुरुजी की ग्रंथ साहब में, 943, और जब वो वर्णन करते हैं तो कई वर्णन, तो ज्यादा वर्णन, अब जितने पॉजिटिव वर्णन करते जाएंगे अंत नहीं आता है. इसलिए then they take resort to नेति 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 नेति, नहीं ये नहीं ये नहीं ये नहीं ये नहीं ये नहीं. For example, what I am I can describe very in a few words. You see, I am my name is this, I am from Punjab, I am this much old, I was born on this day, like that. But what I am not, वो तो endless है. I am not you, I am not you, I am not you. I am not from this place. I am not from Japan. I am not from this. I am not hungry. I am not this. Not का जो यूनिवर्स है, what I am not is endless. इसलिए नेति जो होती है उसे जैन कहते हैं स्वपर्याय और परपर्याय. तो परपर्याय का जगत बहुत बड़ा होता है, तो इसलिए ब्रह्मन की डेफिनेशन ज्यादा परपर्याय में होती है, जो ह्यूमन कॉन्सेप्ट्स के बियॉन्ड, ह्यूमन कंसेप्चुअलाइजेशन के बियॉन्ड है, इसलिए उसको कहता है निर्भय. अकाल मूर्त. नाउ दैट्स व्हाई अकाल. काल इज टाइम एंड इन आवर कंट्री काल गणना, काउंटिंग ऑफ टाइम बिगिंस फ्रॉम उज्जैन में मंगलनाथ का मंदिर है जिसके नीचे से कर्क रेखा निकलती है. हमारे यहाँ जैसे ग्रीनविच में जो टाइम दुनिया में चल रहा है, वो इंग्लैंड में जो ग्रीनविच है वहां से काउंटिंग होती है, हमारे यहाँ उज्जैन से होती है, मंगलनाथ से. तो और अगर आप भागवत पुराण पढ़ेंगे तो कितनी सूक्ष्म टाइम की कैलकुलेशन से युगों तक कैलकुलेशन स्टेप बाय स्टेप दी जाती है. तो काल इज ए ह्यूज स्पेस, टाइम. बट टाइम है क्या? वेरी डिफिकल्ट. I go to a friend's house after 10 years and I look at his child. अरे इतना समय बीत गया, ये इतना बड़ा हो गया. समय बीतने का पता हमें कैसे लगता है? जब कोई ऑब्जेक्ट बदल जाता है. ये जरा ध्यान से समझने की बात. समय अदरवाइज क्या है? कोई चीज, सुई की घड़ी यहां से हट के उधर चली गई, यही हुआ ना कि समय बीत गया. या जिसको आपने इतना सा देखा था 3 फुट का, वो 6 फुट का हो गया, समय बीत गया. नदी में देयर इज अ बोट which was here and after 3 hours you see the boat is there, time has elapsed. पर काल में ही वो ऑब्जेक्ट की स्थिति, the object stays, takes form, is formed in the river flow of time. टाइम का फ्लो है which is not visible, उसी में होता है. तो काल, इसलिए एक ब्रह्मन अद्वितीय अनेक कैसे हो जाता है? आप में भी ब्रह्म है, आप में भी है, कुर्सी में भी है, पेड़ में भी है, पक्षी में भी है, मेरे में भी है, पर हमने तो कहा ब्रह्मन तो एक है. तो एक अनेक कैसे हो गया? एक अनेक कैसे हो गया? एक अनेक हो गया काल शक्ति से. काल, टाइम इज इंडिपेंडेंट ऑफ ब्रह्मन. काल की शक्ति से ब्रह्मन अनेक हो गया. 1940 में कपिल कपूर आ गया काल, और पता नहीं, आई विल गिव लॉट ऑफ टाइम टू माई सेल्फ. तो आशीर्वाद दिया किसी ने कि आप 100 साल जियोगे. मैं कहा बस फिर तो 19 साल ही रह गए, थोड़ा आगे बढ़ा दो ना. थोड़े 10 साल और दे दीजिए. तो उस स्पेस में ये फॉर्म रही. तो उस स्पेस में कपिल कपूर में भी ब्रह्मन रहा. तो ब्रह्मन जो है वो अनेक काल शक्ति से होता है, काल शक्ति से. इसलिए जो ब्रह्मन अक्षर है, बदलता नहीं, अनेक नहीं होता, वो अकाल है. अकाल, which does not change.
सो पर ब्रह्म भी हम लोगों के दर्शन में जब आता रहा, उसमें ये जो सेंस है कि जो पार ब्रह्म है वो बियॉन्ड टाइम है, वो नहीं आती। सो गुरु जी ने अकाल शब्द का किया प्रयोग, और गुरु गोविंद सिंह जी ने एक पूरी लंबी हिम अकाल पे लिखी। अकाल क्या है? अकाल स्तुति लिखी। ठीक है। सो अकाल, अब देखिए अकाल मूरत, लड़ते सारे हैं, सब लड़ेंगे, पर अर्थ लगाना बड़ा कठिन है। और जब अर्थ लगाते हैं, क्योंकि आजकल पॉलिटिक्स भी बहुत हो गई ना, अभी लोग कहते हैं हम हिंदू नहीं है, हम इनसे अलग हैं, हम उनसे अलग हैं, हम उनकी तरह हैं, तो अड्डवाद जिसको कहते बड़ा है। पर वो तो छोड़ो छोड़ो है, पर तुम पहले ये तो समझे है क्या ये। अगर आप हैं जो हैं, तो वो क्या है, वो समझना जरूरी है ना, वो पहले समझना जरूरी है कि हम हैं क्या। और इसलिए अकाल मूरत मतलब मूरत इज अमूर्त और मूर्त है ना, अमूर्त और मूर्त इज द फॉर्म। तो ये जो फॉर्म है एक ओंकार, ये टाइमलेस है, अकाल है, अकाल एज एडजेक्टिव, और अकाल एक ओंकार, अकाल टाइमलेस है। मूरत, इट इज द फॉर्म दैट ब्रह्मन टेक्स, एक ओंकार। आप समझ लो, दो अर्थ निकले, फिर बदल गया। एक ओंकार अकाल मूर्त, अजूनी मूरत is it the form of what is timeless? Is timeless, or it is timeless and it is a form of Brahman, वो अलग अलग दो हो गए। Then ajuni, not subject to birth. Naturally, if you are not subject to birth, you are not subject to death. If you are not born, you will not die. तो गीता में मेरे एक मुसलमान मैकेनिक भाई होता था, जो मेरी पुरानी एम्बेसडर देखा करता था, एम्बेसडर कार। एक बार मुझे कहते हैं, बाबूजी आप इसको चला दो, इसको चालू कर दो, चला दो, इसको चला दो, मतलब बेच दो। मैं कहा क्यों, क्या बात है? बोले देखिए, जिसकी पैद होती है उसका खात्मा होता है। He didn't know, he was speaking Bhagavad Gita, है ना। How it reached him, well, that's another story. हमारी जो कथा प्रवचन परंपरा, ये जो गुरु नानक ने पूरे उपनिषदों का ज्ञान लोक भाषा में डाल दिया, या गुरु गोविंद सिंह जी ने शास्त्रों का ज्ञान लोक भाषा में डाल दिया, या ज्ञानेश्वर जी ने गीता का ज्ञान मराठी में डाल दिया, या रामानुजाचार्य ने ब्रह्म सूत्रों का ज्ञान अपनी तमिल टीका में डाल दिया। तो इस तरह इस देश में पूरे भक्ति काल में भक्ति पोएट्स ने they vernacularized the knowledge, they transferred the knowledge from the granthas into the languages of the people. And because that same knowledge is in all Indian languages, so in spite of so many languages, we are all one people. You go anywhere in this country, you will feel you are in the same country. You don't understand the language, but you saw that you see that you are in the same country. KPS Gill, the great IG of Punjab, he once came to JNU and he said, you are intellectuals, you go on discussing whether India is a nation or not. But let me tell you, I have been posted in 31 places in this country, and wherever I was, I always felt I was in the same country. What binds the people? Is the consciousness which is produced by a common knowledge heritage. And that common knowledge heritage is the knowledge of the Vedanta. This one, Advitiya wala Vedanta. Everybody believes in this. And it is a part of your thinking. Chetana ka ekatva hai. A unifying of your consciousness, your thinking. Saibham, isliye for all, Guru Prasad. You will understand this only if a teacher is kind to you. Guru ka Prasad. Only a teacher. Guru bin Guru Gyan kahan se paun? Guru Govind dau khade काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो मिलाए। तो ये सारी बात समझ आएगी अगर साहब
आपको गुरु का प्रसाद मिलेगा. इफ यू हैव ए टीचर हु कैन एक्सप्लेन दीज थिंग्स टू यू. तो ये इनका मूल मंत्र है. और गुरु नानक की ग्रेटनेस ये थी कि ये मूल मंत्र तो ये देखिए बिल्कुल वेदांत का ब्रह्मन का कॉन्सेप्ट है, और ये निराकार और निर्गुण है. निराकार और निर्गुण है. परंतु फिर उनको घूमते थे, वो दक्षिण में भी गए तो उन्होंने दक्षिणी ओंकार भी एक पोएम लिखी है. दक्षिणी ओंकार. दक्षिणी ओंकार में सगुण ब्रह्मन, ब्रह्मन क्या क्या रूप लेता है, देवी देवताओं के, विष्णु है, रुद्र है, उसके ऊपर उनका वर्णन है. एंड दैट इज व्हाट मेक्स गुरु नानक यूनिक. He was the crown jewel of Bhakti movement because he was one thinker who had the entire country, Hindustan, Khurasan. About Babar he says, Khurasan khasmana kita, Hindustan daraya. He is the first one to use the word Hindustan in the sense of the entire country. So that pan-Indian consciousness, and his travels across the country, and then composing Dakhini Onkar. He also composed, he also entered into intellectual argument with the available thought of the time. The Nath Yogis of the Parampara thi, ek unki poem hai Siddh Gosht hai. And then he also went into what has concerned all philosophers, the question of creation. And in Asadi War, he talks Arbad and Arbad, Dhundkara. So you see, there were हजारों सैकड़ों करोड़ों वर्ष पहले अंधेरा ही अंधेरा था, धुंध थी, फॉग थी, धुंध थी, और फिर उसमें कुछ नहीं था उस वक्त. धीरे धीरे जो नासदीय सूक्त है ऋग्वेद का, पूरे नासदीय सूक्त का ज्ञान जो है उन्होंने भाषा में डाला है इसमें. और उस धुंधकार से बाद में कहना धुंध मिटी जद चांगन होया जब नानक प्रगटया. And then people began to understand those things again. So when the sixth system moved from Gyan Marga to the Karma Marga, Guru Gobind Singh Ji, because there are two ways to defend your dharma. Now, dharma doesn't mean religion, your culture, your civilization, your culture and civilization. And there have been the two marga, Shastra and Shastra, weapon and Shastra. Shastra, Gyan. Guru Nanak Ji in those times started with Gyan. पांचवें गुरु ने ये रियलाइज किया that सिर्फ शास्त्र से बात नहीं बनेगी, शस्त्र भी रखना पड़ेगा. तो he started wearing two swords, मीरी और पीरी. एक तरफ पीरी ज्ञान पीर, और दूसरी तरफ मीरी तलवार. और उसका कल्मिनेशन था गुरु गोविंद सिंह जी, जो कि he became a great warrior, a great thinker, a great poet. और उन्होंने मैं अभी कह रहा था आपको कि हम बड़ी चीज को छोटी बनाने में बड़ी शलाघा रखते हैं ना, बोनसाई करने में. पर गुरु गोविंद सिंह जी ने क्या, चिड़िया से मैं बाज लड़ाऊं तो गोविंद सिंह नाम धराऊं. When I make the sparrow fight the eagle, then I will be Guru Gobind Singh. फिर एक मेरा जो सिख है वो 1.25 लाख के बराबर है, 1.25 लाख के. And in the Battle of Saragari in 1889 or something, 18 Sikh soldiers, 18, they fought 40,000 Pathans, 40,000. तो ये जो स्पिरिट उन्होंने इन्फ्यूज की, खालसा बनाया, अकाल से खालसा तक, मतलब निर्गुण से सगुण तक मूवमेंट हुई, शास्त्र से शस्त्र तक मूवमेंट हुई, शस्त्र तक. And he called for the 5 people in Anandpur Sahib, and he came with a sword with blood on it. Of course, it was a goat's blood. But he said, I want somebody's head. Who is prepared to give his head for me? One man got up. He took him behind, came again. So 5 persons. Very few people know those 5 Panj Pyare, those 5 first disciples of Guru Gobind Singh. They came from all parts of India. The first one came from Odisha, Jagannath Puri. The second one from Berar, Andhra Pradesh. You see, third one from Gujarat, and fourth one from Meerut. He was a Jat from Meerut. And the 5th one from Punjab, a man of our community. तो पूरे इंडिया से उनको दुखी लोग थे. तो गुरु गोविंद सिंह जी को उनको लाइट नजर आती थी कि he was, and he became a fulcrum, focus for people to come. तो 5. That's why
You know, Maharaja Ranjit Singh, when he died, he willed Kohinoor to Jagannath temple. And Maharaja Ranjit Singh had never traveled beyond Satluj. How did he, why did he will the Kohinoor to Jagannath temple? Of course, it didn't reach them because Rani Jinda said the British took it from Rani Jinda after Maharaja Ranjit Singh died, and they have broken it into three because they were told that the Kohinoor has been there since the Pandavas, and whichever king owns it, that kingdom is destroyed. So they have broken it up and put it in the crown of the queen. But their kingdom has, in any case, been destroyed, even then, in spite of breaking the Kohinoor. So Kohinoor he wailed to, why? Because the first person who offered himself, his life to Guru Gobind Singh was from Jagannath Puri. You see? So the movement from the trajectory from Akal to Khalsa is a trajectory, and this happened only to Sikh. It didn't happen in Jain, it didn't happen in Buddha, in India it didn't happen. Sanatan was a combination of Shastra. But Sanatan got caught up so much in Karma Kanda, ritual, that the focus was lost. And Sanatan was overlaid by Jainism, Buddhism, and just as every Hindu is a Sikh today. I mean, even the deep south say when the Hindus go on a pilgrimage to north, they go to a Golden Temple. वो जरूर जाते हैं. So in the same way, every Hindu is a Buddhist. Mahatma, you may not see many Buddhist people formally, but the principles of Buddha, that ahimsa, not doing violence to jiva. In the evening, when we used to touch a plant, my grandfather used to say, उसका भी सोने का टाइम है. इस वक्त क्यों छेड़ रहे हो, क्यों फूल तोड़ रहे हो? Why are you plucking the flower? So that way, in India there is a synthesis of all systems, and Sikhism got inflected partly by the Arabic system also, by the Middle Eastern system also, because of the circumstances, because they were fighting, they were a fighting force, and when you fight somebody, then part of the nature of that person you fight also comes to you. But apart from that, you see, there are things. But then basically, the Sikh system is a synthesis. Sikh thought and is a synthesis. The Guru Granth Sahib and the Dasham Granth is a synthesis of. It is a single statement of the entire history of ideas from Rig Veda to Guru Granth Sahib. I will close by telling you that Rig Veda is composed in meter called Chand. Guru Granth Sahib is in meter called Rag, and Rig Veda is in 10 mandalas, and Guru Granth Sahib has 10 gurus, you see. And so you see, from Rig Veda to Guru Granth Sahib is a statement of India's history of ideas. Well, thank you very much. Thank you. Professor Conrad Elst, namaskar. Very happy to hear you. Thank you, sir. Thank you for listening, for being here. Thank you for being here, sir. Right. One remark. So of course I'm very enthusiastic about the contents of your talk. Learned a lot, but you mentioned that when you wrote that foreword to the Encyclopedia of Hinduism, you were warned by people, by rabbis and priests, that the word Semitic for the international audience has wrong connotations, given by the Nazis, because it evokes the word anti-Semitism. Right. In this case, you see, I know that Hindus are quite innocent of this. Yes. They speak of Semitic. Yes. They still use that word precisely because they are totally innocent of anti-Semitism. They don't know, and in this case, it's a good sign that they don't know. They don't know, yes. They're not burdened with this guilt complex that the West has.
Thank you very much. In fact, that is very, very, very apt, and I'm glad that you have mentioned this, so that if there's the impression that that went across, it was wrong. What I was only trying to draw attention to was that because there are 3 terms, and there are problems about those terms, and people question, why do you call this system this, system this, system that? And obviously, sir, Yes. that we are certainly not anti-Semitic or anti this. Certainly No. not. It is only in the case of Vedic, there is no problem. Simply we say Vedic system and the matter ends. But we go by the text. But there, either we go by an individual, or we go by a race, or we go by a community with a because at least in later works, and even actually, basically, it is a Hebraic system. It is a Judaic system that started, and the Christianity and Islam were the variations on that, variations for that. And we have, in fact, one of my students gifted me the Hebrew Bible. It is in Hebrew, and it has the parallel annotations. And in the Hebraic, the Jewish Old Testament, I discovered that they don't accept the 20 prophets. They only accept 12 prophets. And there are other differences also. More importantly, the Hebraic Old Testament existed originally as an oral document. Of course. And they have, besides the written, they have oral text memories also, which brings them quite close to the Indian system. All right. At least in the mode. Thank you, sir. Okay. Thank you very much. Thanks, sir. It's a very nice talk, and especially your explanation of energy and matter and origin of the human is really wonderful. I like a lot. So my question was that if this knowledge system was so important, then why people have not tried to write it so that it could be in a very authentic form for generation to generation? Like we are coping with the Manusmriti, some is saying this much verses are in Mahabharata, this much verses. So why they have not written this thing? Why it was in oral form only? Because Tripathi ji, we are an oral culture even today. And orality is not because we did not know writing or script was not there. Ashoka's inscriptions come in 5 scripts, 4th century BC. And Ashtadhyayi in Panini Ashtadhyayi mentions the word lipi, script, 7 times. So there were scripts. There were writing systems. Ashoka's inscriptions you find in pillar form, in rock edicts. So there were. But then we are an oral culture, which means orality is an alternative system of knowledge, alternative system of knowledge, alternative philosophy of knowledge. In the oral culture, knowledge is created in the mind, stored in the mind, disseminated by the word of mouth, and transferred from one generation to the other through the word of mouth Guru Shishya Parampara. Now this system is far more enduring than the mechanical external storage systems or creation systems. So Aryabhatta in 4th century reached the same conclusions about the universe without instrumentality, with only mathematics, which later on astronomers by telescopes and megascopes and everything, they reached. One reason why they don't accept Indian scientific knowledge as scientific, because they believe it has to be empirical and empirically proved. The question of proof. For them, the proof has to be something visible, measurable, quantifiable. But Indian thinking is alaukika pratyaksha, extraordinary perception. You see, in Indian scientists, they used to see things
with their eyes shut and not open, with eyes shut. Now it is stored. Now that is why, because it was transferred by word of mouth. What does it mean? It means the text was inscribed in the mind of the student. Inscribed. And because there were 6 sciences, auxiliary sciences, Vedangas, which developed almost simultaneously as the Vedic composition started, 6 sciences: phonetics, etymology, grammar, meter, social science, sociology, and this astronomy, Jyotish, mathematics. So these sciences, they are called Vedanga. If you want to read and understand Vedas, you have to master these 6 sciences. That's why nobody reads Vedas these days. Because यहाँ तो एक पोएम समझने में टाइम लग जाता है, आजकल दिमाग इतना हो गया है, तो 6 systems को master करना and then reading, nobody does. But then once you know what how did they transfer the text? They transfer text by let's say take a text like let's say there is a text ABCD. It's a text ABCD. So they will segment it A, B, C, D. Right? Now this segmentation in a continuous language, Samhita form, you know that sounds change. For example, the lamp post. If I speak, it will become lamppost. It will not remain lamppost. Now, in order to analyze lamppost into lamp and post, you need to know grammar, you need to know morphology, and you need to know phonetics. So they analyze the text into various permutations. For example, one permutation will be A, B, B, C, C, D. Another B, A, D, C, reverse. Third combination, A, B, C, B, C, D, A, B, C, B, C, D, C, B, D, C, A, B. 4 levels. So they made more and more complex segmentations and combinations. And a separate, brilliant mind stored one text. These were called Patha, Krama Patha, Jata Patha, Ghana Patha. So 16 bright students of the teacher will remember the text, so that at any time you can reconstruct the exact sounds from those 16 people. You see, in the case of a CD or a video or CDs you have, if it gets damp, you lose the data. Paper gets soiled or burnt or stored, it's gone. But when knowledge is stored in the minds of the people, it remains. People don't know. They won't know that is Ashtadhyayi sitting there. That boy at third bench pe Ashtadhyayi bathi hui hai. He has the Ashtadhyayi in his mind. Max Muller, in 19th century, he said, if you happen to lose all the copies of the Rig Veda, all the manuscripts of the Rig Veda, you can reconstruct Rig Veda from the minds of the people. So it is a culture. Today, suppose you go to an office, आप एक application लिख के ले जाइए. Suppose your electric meter is not functioning, so you write an application that my meter is giving very many figures more than actual, and you go to the office, you put the application before the clerk. He will push the application aside and say, "हाँ बताओ क्या बात है? Tell me what is it." He will first want to. If you go to Europe and you start speaking, they say, "Put it down on paper." They can't understand you. Culture ही oral है, orality है. इसलिए when you open the TV in the morning, there are 20 channels where somebody is explaining some text to you. कोई कठोपनिषद पर पढ़ा रहा है, कोई कुछ बता रहा है, and millions of people listen to them. The great advantage of the most democratic system of knowledge is the oral system, because all that the learner needs to have is the ear.
भगवान ने आंखों पे तो पर्दा दिया है, कान पे तो नहीं दिया, सिर्फ सुनने की ताकत चाहिए. So knowledge is communicated through the word of mouth. That's why an average Indian who has not been spoiled by the education, English education, is a much more learned and wise person than one whom we call educated. Ananda Kumara Swami said, educated Indians, then he gave a footnote. That is how the victims of Indian education are described. Victims of Indian education. So an ordinary rickshaw wala, talk to him, ask him fundamental questions. He'll give you answers like my carman, that mechanic Musliman gentleman jo the. इसको चला दो जी, जिसकी पैद है उसका खात्मा होता है. भगवद गीता का इतना बड़ा श्लोक बोल गए, one that is born has to die. तो इसलिए ब्रह्मन is a juni, is not born. It's not born, so it won't die. It won't die. So you see, it's like this. So Tripathi ji, this is my understanding, and I believe in this. That's why I don't believe in the technological systems of education, because a student learns from the teacher, not only from the information he gives, but the student learns from the teacher, the way the teacher talks, the way he sits, the way he moves, his values, what is he? So it's a total learning. So there's no substitute. No substitute to a teacher. There cannot be. You will produce robots. Ultimately, a robot will be teaching the robots. You know, that's my fear. Yeah. Thank you. Very nice explanation. So as you explained the Akal, can you explain the Mahakal then? No, Mahakal is, the God, the great God of time. क्योंकि काल शिव जी के जो रूप हैं, एक तो काल, उनका काल की भी फॉर्म है. काल मीन्स जिससे डेथ होती है, गॉड ऑफ डेथ, है ना, काल भी है. तो महाकाल, द ग्रेट गॉड ऑफ टाइम. देखिए हमारे यहाँ एक अवधारणा है, काल स्वरूपी भगवान. सुनिए ना फ्रेज ये त्रिपाठी जी, काल स्वरूपी भगवान. भगवान क्या है? काल का स्वरूप है. काल का स्वरूप, स्व का रूप, दिया हुआ रूप नहीं, स्व का रूप काल का भगवान है. तो भगवान काल का ही रूप है. तो काल, महाकाल, पर अकाल इज बियॉन्ड टाइम, बियॉन्ड टाइम, टाइमलेस, नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय टाइम. ठीक है जी, धन्यवाद. महाकाल में प्रसाद मिलता है जो अकाल में नहीं मिलेगा. अकाल के लिए दरबार साहब जाना पड़ेगा, फिर वहां मिलेगा बहुत ही बढ़िया शुद्ध घी का हलवा.